So in the previous session, we learned about beverages. What are various types of beverages, and there are alcoholic beverages and non-alcoholic beverages, and what is the process of fermentation. Fermentation is a process of action of yeast on sugar, and which produces C2H5OH and carbon dioxide. So that is what we did in the previous session, and today we'll move on to the process of distillation. So distillation, as I am saying, this is an art of creating magic. And when I say this is an art of creating magic, I say because there are many beverages, uh, there are many beverages which are produced throughout the world and which have carbon dioxide. But these beverages which are produced with the process of distillation are little different from those beverages. And how they are different? Because of the presence of higher alcoholic content in these beverages. Now, how that alcoholic content increases, and that the process of increasing that alcoholic content is known as distillation process. That is why this alcoholic beverages which are made with the process of distillation have different character, different taste, and different flavors. So that is very important to learn what are distillation. What is distillation? So we move forward understanding what is distillation. So the definition given by Oxford Dictionary. Now Oxford Dictionary defines distillation as the action of purifying a liquid by a process of heating and cooling. Now remember, when we say distillation, distillation happens only when there are two liquids with different boiling point. We cannot do the process of distillation for the liquids where there is same boiling point. So it's very difficult to separate two liquids when there are no difference in boiling point. So हमेशा ये याद रखना है, distillation तभी हो सकता है जब दो liquids का boiling point अलग-अलग. For example, we take oil and we take water and then we mix them. The boiling point of water is 100 degrees Celsius. The boiling point of oil is even higher. So if I start boiling both of them together, तो क्या होगा? सबसे पहले water will boil at 100 degrees Celsius. Water boil होने के बाद क्या होगा? It will convert into vapors, and vapors जब ठंडे होते हैं, and when they cool down, they again converted to liquid. And this process of developing vapors and then converting it into liquid again is known as distillation. So this is a very simple technology into this. Two liquids which have different boiling point, or two or more liquid which have difference in boiling point, can be separated through this process. The next is, what is the definition of spirit? The liquid containing ethanol and water that is distilled from an alcoholic liquid or mash. So the spirits are the beverages which have two things. One is the alcoholic content, the second is water. So those beverages are known as spirit, and of course the spirits are made by the process of distillation. That is very important to remember. Now coming to the next, that what are the principles of distillation? No, principles of distillation means that what do we require to start the process of distillation. So the principle of distillation is based on the differentials in boiling point of different liquids. Ethyl alcohol, which is the alcohol that is produced with the process of fermentation, has an boiling point of 78.5 degrees Celsius, and it vaporizes, and the water boiling point is 100 degrees Celsius. So you see that there is a difference of boiling point. That means we can separate ethyl alcohol and water with the process of distillation, and that's how the beverages, the spirits are made. Now, all this information is through the book of Cartridges and Thomas. It's a beverage book. It's a very good book for your reading. Now, we'll again come to process of fermentation.
Okay, so we have done process of fermentation in the previous session. Now I want to explain it more closely. Okay. Now, what do we require for process of fermentation? We require sugar. So let's say we are making a whiskey, and whiskey is made with barley. So what we do to make whiskey, we take barley और barley को हम soak करते हैं. Soak करने के बाद उसको थोड़ा सा roast करते हैं. Roast करने से क्या होता है? The starch gets converted to maltose sugar. It's a form of sugar, maltose. ये करना बहुत important है because sugar के ऊपर ही ईस्ट काम करेगा, स्टार्च के ऊपर ईस्ट काम नहीं कर सकता. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर व्हिच इज माल्टोज सो दैट द ईस्ट विल एक्ट ऑन द शुगर एंड विल प्रोड्यूस C2H5OH and carbon dioxide. So what we do in the process of fermentation, we have taken the maltose in the form of barley और उसको हमने ईस्ट के साथ water mix करके छोड़ दिया for 5-7 days. Now what's happening? The yeast is acting onto the sugar which is present in barley और उसको convert कर रहा है ethyl alcohol में. इस वक्त केवल ethyl alcohol नहीं बनेगा. Okay? Ethyl alcohol के अलावा भी बहुत सारी चीजें बनेंगी. There are so many other compounds. There are so many other types of alcohol, acids and other compounds which are to be developed during this process of fermentation. So we define this process of fermentation as that it is an action of yeast on sugar and it produces C2H5OH and carbon dioxide. But it's actually not happening this way only. There are so many other things which are happening in that liquid. Now what all is being produced over here? So on the left I have alcohol. So various types of alcohol are being developed. Ethanol, propanol, butanol, amyl alcohol, glycerol and phenylethyl. Acids which are being developed: acetic acid, caproic acid, caprylic acid, lactic acid, pyruvic acid, succinic acid. Other compounds which are being developed: carbon dioxide, acetaldehyde, diacetyl, hydrogen sulfide and ketone and so many other compounds. Now when you ये सारे टर्म्स आपको थोड़ा सा टफ लगेंगे. ओके, बट रिमेंबर दैट फॉर नाउ इथाइल अल्कोहल व्हिच इज फर्स्ट ऑन इनटू द अल्कोहल कैटेगरी. इथाइल अल्कोहल के अलावा भी बहुत कुछ बन रहा है, ये अभी याद रखने के लिए काफी है. तो इथाइल अल्कोहल के अलावा ये जो सब बन रहा है ये एक कैरेक्टर देता है आपकी अल्कोहलिक बेवरेज को और स्पिरिट को. द बॉडी, द अरोमा, द फ्लेवर. ओके, ना हर एक विस्की अलग अलग है. ओके, so if you go for Ballantine, if you go for Scotch whiskey, if you go for Irish whiskey, Canadian whiskey, सबके फ्लेवर अलग हैं. ये फ्लेवर अलग क्यों है? अदरवाइज तो उसके अगर ये स्पिरिट है तो इसके अंदर वाटर है और इथाइल अल्कोहल है. बट हाउ all these whiskeys have different flavor. These whiskeys have different flavor because of all these properties, because of all these compounds which are there in little bit amount. तो हमें ये सब भी पता होना चाहिए कि एक फर्मेंटेशन के बाद जो लिक्विड बनता है उसके अंदर क्या क्या होता है. Because these all compounds, alcohol, acid will give different character. Now do you know that किसी अल्कोहल विस्की के अंदर चारकोल का भी फ्लेवर होता है. And there are some whiskies जहाँ पे बटर का फ्लेवर है. There are some whiskies जहाँ पे मिल्क फ्लेवर है. So lactic acid is there, caprylic acids are there. So ये सारे एसिड विस्की को कैरेक्टर देते हैं. ओके, इथाइल अल्कोहल तो ऑफकोर्स अल्कोहलिक कंटेंट देता ही है, बट इसके अलावा जो कैरेक्टर्स हैं, जो फ्लेवर्स हैं, वो सब इन सब कंपाउंड से आते हैं. और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहां से वो कैरेक्टर्स आते हैं, बट मेजरली इन सब चीजों से ये कैरेक्टर आते हैं. एंड जो लिक्विड बनता है फर्मेंटेशन के बाद उसको क्या बोलते हैं? फर्मेंटेड लिक्विड और अल्कोहलिक वॉश. दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज क्लास. फर्मेंटेड लिक्विड और अल्कोहलिक वॉश. ओके, जो भी लिक्विड फर्मेंटेशन के बाद बनेगा उसको हम बोलेंगे फर्मेंटेड लिक्विड और अल्कोहलिक वॉश. Coming to next, types of distillation. There are two types of distillation. One is pot still distillation and one is patent still distillation. Only two types of distillation.
pot still distillation and patent still distillation. So we are coming directly to what are these distillation. So first we'll talk about pot still distillation. So all those beverages where you see there's good color in the beverage in the spirit, they are made by the process of pot still distillation. This pot still distillation was carried out from earliest time using pot still, initially made of ceramics or glass and eventually of copper. This said by Nicol 1997. Distillation by a pot still often require two distillation in separate stills, and this is called batch still distillation. The fermented liquid or wash is heated. Now we know that after the process of fermentation, we have a liquid which is known as alcoholic wash. Is it clear? So we have a liquid that is known as alcoholic wash or fermented liquid, and this fermented liquid is distillation. So let's come directly to what is this liquid and how the process of pot still. So अभी एक image दिख रहा है आप सबको आपकी screen के ऊपर, okay? So we'll talk about this image for 1 or 2 minutes and we'll understand what is this process of distillation, pot still distillation. So एक pot दिख रहा है जहाँ पे alcoholic wash है, okay? इस pot को हम बोलते हैं copper because as I said in the previous slide, ये starting में copper के होते थे, इसीलिए इस pot को बोलते हैं copper. So as you can see, I will use this marker, so maybe you will be able to understand. So this pot is known as copper, और इसके अंदर क्या है? Alcoholic wash. So from the previous slide, we know that alcoholic wash contains water, ethyl alcohol, various other types of alcohol, various types of acids and various other compounds. So alcoholic wash के अंदर ये सब है. Now process of distillation क्या बोलता है? It says that it is the process of separating two or more liquid by the action of heat. And every liquid should have difference of boiling point. So when we know that alcoholic boiling point, ethyl alcohol boiling point is 78.5 degrees Celsius. तो इस पॉट के नीचे देखो हीट है, और इसको हीट करना शुरू करेंगे एंड वॉट एवर लिक्विड दोज हु हैव बॉइलिंग पॉइंट अर्लियर और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले एवेपोरेट होना शुरू होगा. व्हाट विल हैपन विद दैट लिक्विड विल बॉइल और उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे. दिस वेपर्स विल मूव थ्रू दिस पाइप. दिस पाइप इज नोन एज स्वान्स नेक. ओके, दिस पाइप फ्रॉम हियर to here is known as swan's neck. This vapor will rise to the top, will move through the pipe and will keep on moving and will move into this spiral cord. And over here you see that this is a condenser. Now what is the role of this condenser? ये condenser क्या करेगा? ये सारे के सारे vapors को ठंडा कर देगा. And when vapors get cold, what happens? They convert into liquid, and all this liquid will be collected in a pot which is over here. Okay, so this is the process of distillation. We heat alcoholic wash and then vapors will develop, it will pass through the condenser, and then in the next pot we will have the required beverage. Okay, so what's happening over here? The alcohol is getting separated from so many things and will separate it out. Now what happens in the pot over here, that whatever is being collected is classified into 3 categories. One is head, second is heart, and the third is tail. Now what is heart, what is head, what is heart, and what is tail? So that we are going to discuss now. Now we know that every liquid over here in the alcoholic wash has different boiling point. So we don't know that what is the boiling point of acetaldehyde, or what is the boiling point of propanol, or what is the boiling point of other compounds. We know that the boiling point of ethyl alcohol is 78.2 degrees Celsius. So what we do, we keep a
thermometer or a temperature check over here. When we see that the boiling point, because temperature एकदम से तो 78 पे नहीं पहुंच जाएगा, temperature will rise slowly, so it will rise from 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो evaporation होना start हो जाएगा. Okay, तो जो भी items, जो भी liquid 78.5, okay, what I said 78.5, 78.5 से पहले जो भी बॉयल हो रहा है और जो भी वेपर्स बन रहे हैं और जो भी लिक्विड कलेक्ट हो रहा है, दैट विल बी नोन एज हेड. दैट विल बी नोन एज हेड. और जो लिक्विड 78.5 टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है और जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है 78.5 डिग्री सेल्सियस पे, दैट विल बी नोन एज हार्ट. और 78.5 के बाद जो लिक्विड्स कलेक्ट हो रहे हैं, दे विल बी नोन एज टेल. So what do we come to know with this? That head will have some impurities, tail will have some impurities, heart will have minimum impurities, because it is a ethyl alcohol which is boiled at 78.5 degrees Celsius. So out of head, heart and tail, heart is the purest form of alcohol. And this process doesn't get completed in one go. It is to be repeated again, because in this process, lots of impurities pass on to the next step. So if we do not do it twice, at least pure alcohol will not be achieved. So how this process will go on? The heart from this first pot distill will be back in the process again. So इस heart को जो यहाँ बना है, ये वापस से जाएगा एल्कोहलिक वॉश के अंदर, नए एल्कोहलिक वॉश के अंदर, और फिर से प्रोसेस होगा एंड फिर से बनेगा हेड, हार्ट एंड टेल. एंड दैट हार्ट फ्रॉम द सेकंड पॉट डिस्टिल विल बी द रिक्वायर्ड एल्कोहल दैट वी will process for further to make whiskey, vodka, gin, rum, tequila, and whatever beverage. So this is how the process of pot still distillation goes on. So for now we'll move on and then we'll have question and answer regarding this. The next distillation is patent still distillation. This is very automatic kind of distillation. A patent still distillation is also known as continuous still distillation, column still distillation, coffee still distillation, and a variety of still that consists of two columns. The first column is called the rectifier and the second column is called analyzer. The patent still was made by Annis Coffey in 1831, and that is why this system is known as patent still, because of on the name of Annis Coffey. So इसको हम और को क्या बोलते हैं? Coffee still भी बोलते हैं, because it is developed by Annis Coffey in 1831. And this is how the system looks like. There is one analyzer, there is one rectifier. So first the beverage is fitted into over here. This is mash, alcoholic wash or fermented liquid or mash, whatever you call it. So various books use different terms for this. So this is the liquid which is being derived after the process of fermentation. It goes from here. There are various perforated plates, like we were doing pot still 2 times. यहाँ पे आपको 2 बार नहीं करना है, एक ही बार में आपका जो required alcohol है वो बाहर आएगा. Okay, so this patent still is to be done once only. There are 2 columns. One is the rectifier, one is analyzer. I will show you a short video. So this is a patent still distillation. It's a very beautiful video and a very simple way ये समझाते हैं. तो आप देख रहे होगे ना, ये बीच में परफोरेटेड प्लेट्स हैं और नीचे से आप इसको बॉईल करते हो. स्लोली दिस लिक्विड will rise through these perforated plates. और यहाँ से आप alcoholic wash insert करते हो. Okay, from here you insert alcoholic wash and this alcoholic wash will move down और नीचे से heat will come up, and at a point the alcoholic wash and the heat will match together and will convert the alcoholic wash into vapor.
तो जो भी लिक्विड एल्कोहलिक वॉश के अंदर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर में कन्वर्ट होगा एंड विल कीप ऑन राइजिंग टू द टॉप. ओके, सो यू विल सी नीचे से वेपर्स will meet the liquid, और ये जब लिक्विड को मीट करेंगे दिस लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर और फिर वो ऊपर राइज करना शुरू कर देगा. एंड इट विल रीच टू द डोम विच इज ऑन द टॉप, और डोम के बाहर नहीं जा सकता. तो क्या होगा, these vapors will again convert to liquid, और फिर यहां से ये सारा का सारा लिक्विड अलग सेपरेट हो जाएगा एंड विच इज रिक्वायर्ड alcohol that we need. So that is how the process of patent still distillation goes on. तो पेटेंट स्टिल डिस्टिलेशन इज अ डिस्टिलेशन जहां पे आपको 2 बार डिस्टिलेशन नहीं करना है. It is only to be done once, and in the one go only you get the purest form of alcohol. The purity of alcohol in the patent still is almost 90 to 95%, even higher sometimes. But the purity of alcohol in the pot still is around 70 to 75%. Because what happens in the pot still, that's not the purest form of alcohol, but in the patent still you get the purest form of alcohol. So we did pot still distillation and patent still distillation, and then in the next session we'll be learning that what are different types of beverages which are made through these distillations. One important term which I want to mention over here is congeners. That's the term, congeners. So that's it. In the next session, which what we will be discussing is what are different types of beverages which can be made by this process of distillation. And we know that whiskey is made by this process of distillation, the rum is made by the process of distillation, gin is made, and then tequila is made, vodka is made. So these are the spirits. Yeah, these are the spirits which are made by the process of distillation. So in the next session, please suggest what would you like to study in the next session. So that's all from my side. Now I am open to question and answers. So anybody can unmute themselves and ask questions. सर गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर, मुझे पता नहीं चला कि सर प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है जब हम डिस्टिलेशन करते हैं. हाँ पहले अल्कोहल. यस सर. यस कंटिन्यू. सर आई एम सेइंग कि सर जब हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर लेते हैं उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क आता है. वो आपने बताया 75.8%, वो तो अलग अलग वो उसकी अलग अलग वैरायटीज होगी, बट उसमें मतलब अल्कोहलिक ज्यादा हो जाता है कि वो चीज पूछ रहा था मैं सर आपसे. ओके, सो व्हाट हैपेंस इन द डिस्टिलेशन में आपने जो भी अल्कोहल बनाया है विद द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वो और रिफाइन होता है. उसकी द इंटेंसिटी ऑफ अल्कोहल और द प्योरिटी ऑफ अल्कोहल इंक्रीज होती है. ओके ना, होता क्या है डिस्टिलेशन में, दोनों तरीके के डिस्टिलेशन में, पॉट में और पेटेंट में. ओके आप क्या कर रहे हो, आपने जो भी अल्कोहल बनाया है अभी आप उसकी प्योरिटी इंक्रीज कर रहे हो. फर्मेंटेशन के बाद उस लिक्विड में जो लिक्विड हम बोल रहे हैं फर्मेंटेड लिक्विड और अल्कोहलिक वॉश, उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ. ओके अभी जो फर्मेंटेशन कंप्लीट हुआ है उसका बचा हुआ ईस्ट भी है, थोड़ी बहुत शुगर भी है, क्योंकि ईस्ट ने सारी शुगर तो नहीं खाई होगी तो वहां पे थोड़ी बहुत शुगर भी है. एंड देयर आर सो मेनी अदर टाइप्स ऑफ अल्कोहल, अदर कंपाउंड एसिड्स जो मैंने अभी आपको एक इमेज के अंदर दिखाए थे. तो उस लिक्विड में बहुत कुछ है. अब आपने क्या करना है, टू मेक स्पिरिट हमें वो सारी चीजें कम करनी है, और जो इथाइल अल्कोहल है C2H5OH उसका परसेंटेज इंक्रीज करना है.
बिकॉज स्पिरिट्स की जब हमने डेफिनेशन की थी, इट हैज टू लिक्विड, मेजॉरिटी ऑफ लिक्विड, वन इज वाटर एंड वन इज इथाइल अल्कोहल. तो वो इंटेंसिटी ऑफ अल्कोहल, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कैसे बढ़ेगा? इट विल इंक्रीज बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. You can go for the process of pot still distillation और patent distill. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉट से जो अल्कोहल बनेगा वो 2 बार में बनेगा. ओके, पॉट स्टिल कभी भी एक ही बार नहीं होता है. इट इज टू बी डन एटलीस्ट 2 टाइम्स. ओके, नॉट 2 टाइम्स. क्यों होता है? पॉट स्टिल इज अ स्लो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होगा एंड देन सारे अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू हेड, हार्ट एंड टेल. और हेड, हार्ट एंड टेल में कन्वर्ट होने के बाद द हार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉट स्टिल उसको वापस से डिस्टिल करना होगा और फिर बनेगा हेड, हार्ट एंड टेल. और जो हार्ट बनेगा उसको यूज करेंगे हम फर्दर विस्की बनाने के लिए या वोडका बनाने के लिए या जिन, रम, टकीला. जो आपको क्वेश्चन है, ओके, दैट के कैरेक्टर कैसे इंक्रीज होगा? वो कैरेक्टर, जो भी बेवरेज पॉट स्टिल से बनेगा उस बेवरेज का कैरेक्टर हायर होगा देन द बेवरेज व्हिच इज मेड बाय द पेटेंट डिस्टिल्ड डिस्टिलेशन. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो मैंने एक लास्ट में टर्म यूज किया है, कॉन्जनर्स. ओके, ये कॉन्जनर्स पॉट स्टिल वाले बेवरेज में बहुत ज्यादा होते हैं और पेटेंट डिस्टिल वाले बेवरेज में बहुत कम होते हैं. क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि वो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन स्लो है और बहुत सारे अदर कंपाउंड अदर देन इथाइल अल्कोहल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन को क्रॉस कर जाते हैं. जबकि पेटेंट डिस्टिल में क्या होता है? वो सारे के सारे कंपाउंड पीछे रह जाते हैं और वो डिस्टिलेशन की प्रोसेस को पार नहीं कर पाते. तो जो भी बेवरेज पेटेंट पॉट डिस्टिल से बनेंगे उनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, अरोमास होंगे, फ्लेवर्स होंगे, बट बहुत सारे के सारे कैरेक्टर्स पेटेंट डिस्टिलेशन से बने बेवरेजेस के अंदर नहीं है. Please do like, share and subscribe the channel. For more videos, keep tuning to the Hospitality NU channel. And the next session, please suggest what beverages you would like to study. In the comment box, you can post what spirits you would like to study. So the beverages which are based on the process of distillation, we are going to do one by one. So keep your suggestion on in the comment box. Thank you very much.